मैं रिएक्शन चालू करने से पहले जिम कैरी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जिम कैरी मेरा फेवरेट हॉलीवुड सेलिब्रिटी है। लाइक इसलिए नहीं कि वो पिक्चर बहुत अच्छी करता है, पिक्चर तो अच्छी करता ही था, लेकिन मुझे उसका जो बियॉन्ड फ़िल्म इंडस्ट्री पर्सोना है, कि वो स्पिरिचुअल बातें करता है आके, वो बताता है कि भाई ज़िंदगी में बस सेलिब्रिटी बन जाना, मिलियनेयर बन जाना, यही सब कुछ नहीं है। जैसे उसका फेमस कोट भी है ना कि आई वांट एवरीवन टू बिकम मिलियनेयर सो दैट दे कैन रियलाइज दैट बीइंग अ मिलियनेयर और बिकमिंग अ मिलियनेयर इज नॉट द आंसर। सो वो कौन से क्वेश्चन का जो मिलियनेयर आंसर है उसकी बात कर रहा है। तो मुझे तो वही लगता है कि जो अपने अंदर डीप विद इन एक वॉइडनेस का क्वेश्चन है, और जब हम सोचते हैं कि हम इसको फिल कर लेंगे मिलियनेयर बन के, मिलियनेयर वाले आंसर से इतनी गाड़ी हो जाएगी, बुगाटी हो जाएगी, तो हम लोग आंसर कर देंगे, हम लोग खुश हो जाएंगे। तो डायरेक्टली उस चीज़ को एड्रेस करते हुए वो कोट है कि लाइक तुम जिस चीज़ को सोच रहे हो कि मैं उसको अगर पा लूंगा तो मेरी ज़िंदगी में एटर्नल हैप्पीनेस हो जाएगी और मुझे कभी दुख सैडनेस फील ही नहीं होगी, वो मतलब नहीं है, वो इनवैलिड है, उसका कोई भी वजूद नहीं है रियलिटी में। तो मुझे ये बात बहुत सही लगती है कि जिम कैरी बहुत डीप बातें भी करता है, बाकी सेलिब्रिटियों की तरह नहीं कि विमल बेच रहा है या कुछ बेच रहा है। तो वो मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगती है। तो खैर चालू करते हैं वीडियो, देखते हैं क्या होता है वीडियो में। Looking backward. Why don't we just... It was more like you're supposed to say, we're important, and you're supposed to say it's all going to be all right, and you're supposed to say that, whatever you dream can come true, and you're supposed to say all those things. I do believe in manifestation, power of that kind of stuff, but I don't believe that any of it matters. This mattering is to me a human construct born out of a need. The same need as you have to have deities and things like that. I mean, I believe in an energy of God, an energy of everything is divine. There's just not there's no thing that isn't divine. Everything is divine, and I'm that. And it doesn't matter to me what's happening. I'm finding that ultimately the freedom from it is. ये मूवी बहुत मस्त है। क्या नाम है ये मूवी का? मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ तो अजीब ही नाम है इस मूवी का। बहुत अच्छी मूवी का सीन है। हाँ, तो बहुत अच्छी मूवी है ये। वही छोड़ो, ये इसमें यही बात हो रही है कि जहाँ तक मैं इसको इवैल्यूएट और समझ पा रहा हूँ कि हम जो ये बोलते हैं कि अरे नहीं, वी मैटर, we humans do matter. So he's trying to say that we say that we matter because we have this inherent need, the same need we have with the God, that we need to believe in the God. That is why we also believe in that we matter. So I think that's the thing that Jim Carrey is talking about. But let's see. Is something people are kind of hungry for in a way. Right. They're like, I don't want to be me either. Right. And I go, well, great, because you never have been. I believe that I had to become a famous, idea and get all the stuff that people dream about and accomplish a bunch of things. You know what this means, don't you? That look like success in order to give up my attachment to those things. It's been a part of the evolution of ego is. ये वही बोल रहा है कि मैं पहले इतना फेमस होना चाह रहा था कि सब मिल जाए, अब मैं जब फेमस हो गया, जब मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई, मुझे पता है अब डिटैच कैसे होना है इससे। तो ये सिंपल फिनोमिनन यही है कि ये ना मंक हु सोल्ड फरारी। तो पहली बात, तुम्हें मंक या तुम्हें मतलब कि फरारी से डिटैच होने के लिए तुम्हारे पास फरारी होनी भी चाहिए, है ना? तुम कमा ही नहीं रहे हो और तुम बोल रहे हो कि फरारी से मैं तो डिटैच हूँ। तो ये काइंड ऑफ एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं होगी, ये थियोरिटिकल नॉलेज होगी। लेकिन जब तुम्हारे पास फरारी और जब तुम उससे डिटैच हो जाते हो तो वो बड़ी बात है कि तुम्हारे पास सब रहकर भी तुमने ये पाथ चूज किया। तो दैट्स द पॉइंट। Is to spend your vision of ego is to spend your first half of your life acquiring and adding, thinking you can add to yourself, and it looks great. I mean, it looks great when you got a cool car and you got good, nice clothes, and and you've done something that people admire. But
it can never fulfill you. You can never be happy. You know what I mean? It's not where happiness. सही बात है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों मतलब मिल सकती है, वो कंफर्टेबल कर सकती है लाइफ, लेकिन वो लाइफ में मीनिंग ऐड नहीं करेगी। और जहाँ तक वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रॉब्लम है वो यही है कि वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअल कम है। स्पिरिचुअल जब मैं बोलता हूँ तो वो क्लीशे स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी जो खैर छोड़ो। हाँ, तो वो क्लीशे स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो स्पिरिचुअल मैं बोलने का मतलब होता है कि एक कोई भी सामान, कोई भी चीज़ है, उसमें एक डीपर मीनिंग होता है, जो कि फिजिकल नहीं है, उसको तुम देख नहीं सकते। ठीक है, तो वो मीनिंग के परस्यूट में लाइफ बिताना इज मोर मीनिंगफुल देन द मटेरियल इटसेल्फ। Comes from. And, you know, I dealt with depression, you know, a few years ago, and people still think, well, he's going through, you can tell he's depressed. It's not. I have no depression in my life whatsoever. Literally none. I have sadness and joy and elation and satisfaction and gratitude beyond belief, but all of it is weather, and it just spins around the planet, you know. It doesn't sit on me long enough to kill me. The happy place is realizing that you're everything, you know, and that there's no real you involved in the first place. You know, it's a weird little semantic jump. वाओ, ये मूवी बहुत मस्त है, एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। बहुत That you make where it sounds like, well, that's totally fucking threatening, man. I can't not be me. I've built this construct, and it's just ideas. They're Right. just ideas. You know, the only thing that separates you from an African American or an African Canadian is an idea. You know, and the weather, the adaptation to the climate, and whatever it is. काफी ज्यादा ईस्टर्न फिलॉसफी से मिलती है जिम कैरी की सोच, कि वही तो बोल रहा है ये कि जो हम सोचते हैं कि एफ्रो अमेरिकन और जो अफ्रीकन है वो सब डिफरेंट है, बहुत ही कम डिफरेंसेस पे। जैसे कि वहाँ का वेदर जो है, वहाँ का जो एडेप्टेशन हुआ इस वजह से डिफरेंट है, वरना अगर प्राइमरीली देखें तो हम सारे ह्यूमन बीइंग सेम ही है ना, वी आर ऑल वन, राइट? I don't believe in any of it, and so the feeling of wholeness is a different feeling than meanness. They're all characters that I played, including Jim Carrey, including Joel Barish, including any of those things. They're all Okay. characters. You know, Jim Carrey was a less intentional character. Right. Because I thought I was just building something that people would like, but it was a character, you know, so it's, you know, I played the guy that was free from concern so that people who watched me would be free from concern, you know, and then at a certain point you go like, okay, well, that's great, but, you know, it's like the one thing, like people talk about depression all the time. The difference between depression and sadness is just, you know, from happenstance. Sadness is momentary, depression is like prolonged sadness. I think my definition of depression is Whatever happened or didn't happen for you, or, you know, grief or whatever it is. And depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this character anymore. I don't Okay. want to hold up this I don't know, like depression is a biological phenomenon, right? Like the hormones, the neurohormones of the brain are like in disproportion. So it's a very biological and hormonal issue rather than emotional issue of the brain, I think. But let's see, like I got the feeling of Jim Carrey. Like I totally resonate with this guy, Jim Carrey. avatar that you've created in the world. It's too much for me, Right. you know? And you should think of the word of depressed as deep rest. Deep rest. Your body needs to be depressed. It needs deep rest from the character that you've been trying to play. You know, the great and powerful Oz. I'm the great and powerful Oz. How dare you come near me? You know, kind of thing. And you're just the sweaty guy behind the curtain going. It's an amazing metaphor, you know, in that movie. यही तो बोल रहा था मैं।
हाँ वो मिलियनेयर गलत बोला, लेकिन वो एसेंशियली वही है कि आई थिंक कहाँ गया यार, यही था ना, आई थिंक एवरीबडी शुड गेट रिच एंड फेमस एंड गेट एवरीथिंग दे ड्रीम सो they can see that's not the answer. Yeah, That's what I was saying. कि भाई पहले अमीर बन जाओ, फिर पता चलेगा कि ये सब तो कुछ था ही नहीं, ये सब तो था ही नहीं जो मैं फीलिंग चेस कर रहा था, वो फीलिंग तो कुछ और है, वो फीलिंग है होलनेस की, वो फीलिंग है एक होलनेस की, एक अनलिमिटेड कंपेनियनशिप की वो फीलिंग होती है। लेकिन सही बात है, अगर तुम्हारे पास खाने को ही कुछ नहीं, तुम ये सब के बारे में कैसे सोचोगे? तो मैस्लो हायरार्की नीड पढ़ा है ना कि बेस में सबसे बेसिक नीड्स आती है, पहले तो खाना होना चाहिए पेट में, तभी तो रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन ये सब कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास खाना ही नहीं है तो तुम मीनिंगफुल लाइफ और ये सब के बारे में तो छोड़ ही दो। तो हाँ, पहले ये सब तो ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि रिच नहीं होना चाहिए, या जिम कैरी भी नहीं बोल रही है कि रिच मत बनो या पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ बट उससे उभर जाओ, उससे ऊपर आ जाओ, उससे ट्रांसेंड कर जाओ, खाली पैसे पे ही मत अटके रहो। What up with the liar? हाँ, लायर लायर मूवी का नाम बहुत मस्त है। It's a pretty name, though. It really is nice. It's means merciful, right? Clemency. Good afternoon, good evening, and good morning. ये भी मस्त मूवी है। वाह, अच्छी वीडियो थी यार जिम कैरी की, मजा आया मुझे तो। एक जिम कैरी बंदा ही ऐसा है यार, वो बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी बातें करता है जो कि हॉलीवुड और काम जो है उसका उससे बहुत ज़्यादा अलग है। और वही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट बनाती है कोई भी सेलिब्रिटी को देखने के लिए, कि मुझे लाइक फिलॉसफी बोला, मुझे सेलिब्रिटी से क्या चाहिए पता है? सेलिब्रिटी से चाहिए जब वो इंटरव्यू में बात करें तो कुछ डीपर बात निकल के आए, खाली वो सरफेस लेवल बात ही ना करते रह जाएं कि मैंने तो ये एक्टिंग का, ये रोल का मैंने ऐसे प्रिपरेशन किया था। वो ज़रूरी है, लेकिन यार थोड़ा डीप में अगर तुम बताओगे तो हम जैसे जो कि इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट रखते हैं, जो कि हंगर रखते हैं, उनका भी थोड़ा पेट भरेगा। बाकी तो ऐसे वीडियोस मैं और बनाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर।